So this is, so 2 upon q will become 2q raised to power minus 1. Then we will differentiate it. The derivative of phi will be 0. 2 is constant. The derivative of q raised to power minus 1 will become minus 1 into q raised to power minus 1 and minus 1. 2 into minus 1 will be minus 2 and q raised to power minus 1 will become minus 2. So it will become minus 2 upon q raised to power negative 2 is shifted to convert it to the positive index. It will become 2 upon q raised to power 2. Q upon 2 upon q raised to power 2 minus 2 upon q raised to power minus 2. Started. Anyone may convey the message to Zan Beg. He must write the ID, otherwise he will not be allowed to enter into the class. He will be marked absent. Okay. Now the next question, that was question number H part of question number 4. Now we will do question number 5. Simplify each of the following so that differentiation may be carried out using the power rule. So differentiation can be carried out, you have to simplify. So before finding the derivative, we have to simplify the function. We have to simplify the function. Support. Question number 5. Question number 5, A part. Q raised to power 10 upon Q raised to power 2. This is A part. So first of all, we will simplify it. Who's there? Okay. First of all, we will simplify this one, then we will find the derivative. We will differentiate it. So simplification, Q raised to power 10 upon Q raised to power 2. This power will go upside. It will become Q raised to power 10 minus 2. The answer will become Q raised to power 8. The answer will become Q raised to power 8. Now we will differentiate. Differentiating. How to differentiate d upon dq? इसका differentiate q raised to power 8. We are differentiating, यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें ब्रैकेट में, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. डेरिवेटिव ऑफ q raised to power 8 with respect to q. Derivative of q raised to power 8 with respect to q. dq raised to power 8 upon dq. Talha Khan.
Okay. So we will differentiate it. How to differentiate? With respect to q, 8 will come over there into q raised to power 8 minus 1. It will become 8 q raised to power 7. ये डेरिवेटिव हो गया इसका. दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने. q रेज़ टू पावर 8 हो गया सिंप्लीफाई होके. उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया. तो क्या किया? d ऑफ dq और q रेज़ टू पावर 8 का डेरिवेटिव. पहले y लिखते थे, अब y यहाँ नहीं है क्योंकि ये फंक्शन ही है, तो ये फंक्शन ही हमने डायरेक्ट डाल दिया और इसको डिफरेंशिएट किया. 8 पावर विल कम ओवर देयर. q रेज़ टू पावर 8 minus 1 will become 7. So 8 q raised to power 7. This is the derivative. This is the derivative. In the same way, we have to do B part. We will do the B part. 4 under root q upon q raised to power 2. 4 under root q into q raised to power 2. So before differentiation, we have to simplify this one. So it will become 4 q raised to power 1 over 2 upon q square. It will go up 4 q raised to power 1 over 2. ये पावर 2 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगी. So it will become 4 q raised to power 1 over 2 minus 2 will be minus 3 over 2. Now okay, then Mahin Sayyed. Okay. Now we will differentiate it. Derivative with respect to q of 4q raised to power minus 3 over 2. इसका डेरिवेटिव हमने लेना है with respect to q. This is a function of q. We have to take the derivative with respect to q. क्या हो जाएगा? 4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहा. q raised to power minus 3 over 2 का डेरिवेटिव minus 3 over 2 q raised to power minus 3 over 2 plus 2 हो जाए, plus 1, सॉरी minus 1. एक पावर माइनस कर देंगे, ये पावर नीचे आ जाएगी. 4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहा. ये पावर नीचे आ गई, minus 3 over 2 q raised to power minus 3 over 2 minus 1. ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1 2, 2 2 4. ये कैंसिल हो गया. It will become 2 into minus 3 will be become minus 6. 2 into minus 3 will become minus 6, and q raised to power minus 3 over 2 minus 1 will be minus 5 over 2. 2 1 2 हो जाएगा. 2 1 2. Minus 3 minus 2 will be minus 5 upon 2.
पॉजिटिव इंडेक्स में करना है इसको पॉजिटिव इंडेक्स में करना होगा, तो डी इट विल बिकम -6, 6 ऊपर रहेगा, इसकी पावर 1 है, ये नेगेटिव पावर नीचे चला जाएगा, q⁵ -6 upon q⁵ This is the answer. Derivative of 4q⁵, इसका डेरिवेटिव है ये, डेरिवेटिव ऑफ 4q⁻³ इसका डेरिवेटिव है 6 upon q⁵ -6 upon q⁵ दिस इज द डेरिवेटिव। तो पहले इसको हमने क्या किया, √q को q⁻² कर दिया और नीचे उसके q स्क्वायर था, इसको सिंप्लीफाई किया, ऊपर ले गए 4q⁻² -2, इट विल बिकम 4q⁻³ इसको डिफरेंशिएट किया आप, ये तो सिंप्लीफाई किया हमने इसको यहां तक, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ 4q⁻³ will become 4 is constant, it will remain as it is, and the derivative of q⁻³ will become -3/2 q⁻³ -1। 1 पावर कम कर देंगे, पावर नीचे ले आएंगे और 1 पावर कम कर देंगे, it will become ये 2 1 are 2, 2 2 are 4, so 2 into -3 will be -6 and q⁻³ -3/2 -1 will be -5/2। तो -5/2 को नीचे ले आए, it will become +5/2 -6/q⁵5/2। This is the answer. That was B part of question number 5. In the same way, we have to do C part. We'll simplify. Separate हम, this is x² plus x upon x³ सेपरेट कर लेंगे। डी पार्ट √5 q⁻³ डी पार्ट √5 q⁻³ सिंप्लीफाई करें, दिस इज 5 q⁻³ होल रेज़ टू पावर 1/2 है, ये होल के ऊपर रेडिकल साइन है, होल अंडर रूट मीन्स होल रेज़ टू पावर 1/2, so it will become this also 5 raised to power 1/2 and q⁻³ into 1/2 will be 3/2। अगर किसी भी फंक्शन की x की पावर m है और होल रेज़ टू पावर n है, तो ये दोनों पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x to power m into n, this also 3 into 1/2, ये भी दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, 3 into 1/2 will become 3/2 q⁻³ फिलहाल शेख so it will become q⁻³ now differentiate करेंगे, differentiating derivative with respect to q of 5 raised to power 1/2 q⁻³ इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव,
ये कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा 5^1/, इसका डेरिवेटिव लेंगे q^3/2, इट विल बिकम 3/2 q^3/2 -1, 3/2 will come over there and q^3/2 -1, it will become 5^1/2 into 3/2, ये 5^1/2 है, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो और q^3/2 -1 will be 1/2, 2 1s are 2, 3 minus 2 will be 1/2. This is the answer derivative. और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3/2 पहले लिख देंगे, 5^1/2 will become √5 and q^1/2 will also become √q. ये भी √5 है और ये भी √q है. Both are in under root, so it will be written in the same under root. 3/2 will be outside and it is √5q. √5q. First of all, this is 5q⁻3, the whole under root put in the index form. The radical sign converted into the index form. Radical sign converted into the index form 1/2. So it will become 5^1/2 q⁻3 into 1/2. ये मैंने आपको बताया, होल पावर हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. इसकी भी पावर 1 है तो 1 से 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 हो गया. ये 3 पावर है, 3 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 हो गया. नाउ डिफरेंशिएटिंग, ये कांस्टेंट है एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएट कर लिया तो कैसे करेंगे, कांस्टेंट एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 3/2 into q⁻3/2 -1. So now open the bracket, 5^1/2 into 3/2 into q⁻3/2 -1 क्या होगा, 2 1s are 2, 3 minus 2 will be 1, 1/2 q⁻1/2. इसको रेडिकल साइन में लिख दिया, पावर 1/2 रेडिकल हो गया, 3/2 पहले लिख दिया, उसके बाद 5^1/2 will become √5, q⁻1/2 will become √q. So the final answer will become 2/3 √5q. Both are under root, so those both can be multiplied. So Alvina here. Then Pushpak Nisa. Okay. So this is the way how to solve it. D part. Then we will do E part. E part of the same question. 3 q square plus 2q upon q.
3 q square plus 2q upon q, bracket close, plus 2. So simplify. We shall simplify. 3q पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3q स्क्वायर प्लस 6q होल अपॉन q, और ये प्लस 2 सेपरेट है। इसको फर्दर सेपरेट कर लें, 3q स्क्वायर अपॉन q प्लस 6q अपॉन q प्लस 2। ये q कैंसिल हो जाएगा, q बच जाएगा 3q माइनस 1, ये पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी -1, q रेज़ टू पावर 2 minus 1. This power 1 will go upside, it will become -1. So 2 minus 1. But yeah, so q raised to power 2 minus 1 चले करते, प्लस ये q से q कैंसिल हो गया, 6 plus 2. This will become 3. q 2 minus 1 will be power 1 plus 8. 2 6 plus 2 will be 8. Now we will differentiate it. Differentiating. Differentiating. How to write? d of dq और ब्रैकेट में 3q प्लस 8, इसको हमने डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले y होता था, y नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू y नहीं है, तो हम इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d of dq of 3q plus 8. So what will be the derivative? This is 3q. 3 is constant. The derivative of q will be 1 plus 8. The derivative of 8 will be 0. This is constant. The derivative of constant is 0. So the answer will become 3 into 1 will be 3 plus 0 will be 3. 3 plus 0 will be 3. Answer is 3. और लिख देता हूं प्लस 0, it will become 3. The answer is 3. सादा है। So that was question number E. So first of all, we'll multiply with this one. 3q square plus 2 into 3 into 2q will be 6q whole upon q. ऊपर वाला नंबर ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होता है, अगर नीचे इसके कुछ होता है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है. The numerator always be multiplied with the numerator, denominator with the denominator. So if there was denominator, it must be multiplied with the denominator. But there is no denominator, therefore it will remain q. It is numerator, numerator is multiplied with q square plus 2q, it will become 3q square plus 6q upon q plus 2. Now we divide it by q, 3q square upon q plus 6q upon q plus 2. So q square is cancelled by q, it will become 3q. Q is cancelled by q, it will become 6 plus 2 will become 8. So 3q plus 8. Now differentiating 3q plus 8, the 3 is constant, the derivative of q will be 1 plus the derivative of constant will be 0. So 3 into 1 will be 3 plus 0 will be 3. 3 is the answer. Now question number 7, find the first and second derivative of the following. First and the higher derivative.
फर्स्ट का फिर डेरिवेटिव करें, दैट इज कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव, it will become third derivative, again derivative, it will become fourth derivative. In this way we will find the higher derivative, those are called the higher derivatives. तो इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड करना है. तो find the first and the second derivative of the following functions. क्वेश्चन नंबर 7. ये 5 और 6 हमने इकट्ठा कर लिया. 5 में जो था इसको सिंप्लीफाई करना था और 6 में जो था इसको डिफरेंशिएट करना. 5 और 6 हमने इकट्ठा कर लिया. In question number 5 we had to simplify, and in question number 6 we had to differentiate. So first we simplified, then we differentiate in all the in all the parts of question number 5. So 5 and 6 we have done together. Now question number 7. Find the first and the second derivatives. Seven, A part. X is to power 5. Find the first and the second derivative. First derivative, d of dx. First derivative. So d of dx of x is to power 5. It will become 5x is to power 4. Now the second derivative, it will become d2 of dx square. यहाँ d ऊपर d के ऊपर आएगा पावर, नीचे x के ऊपर of x is to power 5. That means we will find the derivative of this one. 5 constant है. The derivative of x is to power 4 will become 4x is to power 3. The answer is 20x is to power 3. This is the second derivative. Like the second derivative. Second derivative, d2 of dx square of x is to power 5. इसी का second derivative, यानी इसका derivative लेंगे तो वो second derivative हो जाएगा. इसका derivative इसका first derivative होगा और इसका ये second derivative हो जाएगा. So 5x is to power 4 will become 5 as it is, और x is to power 4 का 4x is to power 3. It will become 20x is to power 3. That was the A part. इसी तरह C part हम करेंगे. 10q plus q raised to power 0.5. C part. First derivative. With respect to q. 10q plus q raised to power 0.5. 10 constant है, as it is आ जाएगा. Derivative of q will be 1. Plus इसका derivative 0.5 नीचे आ जाएगा. And q raised to power 0.5 minus 1. तो क्या हो जाएगा ये? 10 1 are 10, 0.5 q raised to power 0.5 minus 1 will be minus 0.5. 0.5 minus 1 will become minus 0.5. अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा इसका. इसका डेरिवेटिव लेंगे because this is also the derivative of this one. So if we take the derivative of this one, that will be the second derivative of this one. So d2 upon dq square .
d2 upon dq square of 10q plus q raised to power 0.5, यानी हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, वो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। 10 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और प्लस दिस कांस्टेंट 0.5 एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ये नीचे आ जाएगा -0.5 q raised to power -0.5 and -1. It will become 0 plus something, तो something ही रहेगा। 0.5 into -0.5, it will become -0.25 and q raised to power 0 -0.5 -1, it will become -1.5. This is the answer. -0.25 q raised to power -1.5. This is the answer. Muhammad Moiz Khan. Okay. So this is the answer, the second derivative. So first we took the first derivative, then we took the derivative of the derivative will be the second derivative. फिर उसका derivative लेंगे, that will be the third derivative. फिर उसका derivative लेंगे, fourth derivative. तो ये पावर यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव पे पावर 1 होती है, लिखी नहीं जाती। सेकंड डेरिवेटिव में ऊपर पावर डी के ऊपर नीचे लिखते हैं और नीचे क्यू के ऊपर, या एक्स होगा तो एक्स के ऊपर, ऊपर डी के ऊपर और नीचे डी के ऊपर नहीं बल्कि क्यू के ऊपर या एक्स के ऊपर लिखी जाती है। So this is the answer. First derivative 10 will remain as it is, derivative of q will be 1 plus इसका derivative 0.5 will come over there and q raised to power 0.5 minus 1. It will become 10 into 1 will be 10 plus 0.5 into q raised to power minus 0.5. This is the answer, the first derivative. अब second derivative लेना है, इसका any derivative लेंगे तो जिसका second derivative होगा तो इसके ऊपर हमने 2 डाल दिया और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ये 10 का डेरिवेटिव 0 प्लस 0.5 इंटू क्यू रेस्ट टू पावर माइनस 0.5 का डेरिवेटिव माइनस 0.5 इंटू क्यू रेस्ट टू पावर माइनस 0.5 माइनस 1. So 0.5 into minus 0.5 will be equal to minus 0.25 q raised to power minus 1.5. This is the answer. This is the second derivative. सर ये ऊपर वाला आइकन करना जी सर, एक मिनट स्क्रीन ऊपर करना, ये एक सवाल करना था। क्या ऊपर करूं? सर स्क्रीन, यस सर। सर ये 4/4x3 कैसा है? फार्मूला लिखा हुआ है, ये पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। वो फार्मूला लिखा हुआ है, वो बार बार बता रहा हूँ, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर नीचे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये डेरिवेटिव होता है। तुम वही अटके हुए अभी तक, एक बात बार बार का था, अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज रिटन ओवर देयर, y is equal to x to power n, the derivative will become n x to power n minus 1, ये लिखा हुआ है, n x to power n minus 1। लेकिन तुम अभी तक वही अटके हुए हो। ये 5 कांस्टेंट एज इट इज हुआ, x टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4 नीचे आएगा, x टू पावर 3 हो जाएगा, कम हो जाएगा, -1 कर देंगे, पावर -1 कर देते हैं, जो भी है पावर उसमें से -1 कर देंगे। इतने सारे क्वेश्चन हो गए, अभी भी तुम वहीं पर अटके हुए हो जहां से चले थे। That was C part. In the same way, we have to do the other questions. Now the 8th, find the first, second and third derivative.
फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव। इसी में एक ही क्वेश्चन है, ये उसका पहले फर्स्ट लेना है, फिर सेकंड लेना है, फिर थर्ड लेना है। दिस इज टीसी, टोटल कॉस्ट। TC is the total cost. Total cost is given. Question number 8. TC is given. Q raised to power 3 upon 5